Hi, so let's discuss this set now. Now this set is a application of averages. Okay, if you understand averages, then it becomes slightly easier or very easy to solve this set. What's given is there are 5 contestants S1 to S5 and there are 6 people A, B, C, D, E, F. Each of these 6 people calculated the sum of scores of exactly 4 contestants. So you have 4 contestants, six people A, B, C, D, E, and F. Each of them calculated scores of exactly 4 contestants. What are the scores that some of the scores that they calculated? 660, 780, 690, 720, 630, and 750. Okay. So they calculated this is sum of exactly 4 contestants. This is also sum of 4 contestants. This is sum of 4 contestants and so on. Okay. Now out of this 6, one of them is wrong sum. कोई एक सम है जो wrong है, कौन सा wrong है उसके हम बारे में बाद में बात करेंगे. But first thing to understand here is, see, A और B का जो sum है वो अलग अलग है. A का sum 660 है और B का 780 है. Since this sum is different for both A and B, that means they added 4 different contestant scores. अगर सेम 4 कंटेस्टेंट का स्कोर ऐड किया होता तो ये स्कोर सेम आया होता, बट सेम नहीं आया मतलब उन्होंने अलग अलग 4 कंटेस्टेंट्स का स्कोर ऐड किया है. वहीं इफ यू लुक एट बी एंड सी, बी एंड सी scores are different, that means they added scores of 4 different contestants and so on. Fine. So if the scores of all of them are different, that means they added scores of 4 different contestants. So अगर इसमें से मान लो कि F गलत था, if F was wrong, that means A to E were correct scores and A से E तक का सबका स्कोर करेक्ट है, तो सबका स्कोर अलग अलग भी है, लेकिन that means सबने अलग अलग 4 पार्टिसिपेंट्स का स्कोर ऐड किया है, कंटेस्टेंट्स का स्कोर ऐड किया है. तो A ने 4 अलग का किया होगा, B ने 4 अलग, C ने 4 अलग, D ने 4 अलग एंड E ने 4 अलग का स्कोर किया होगा. Now adding 4 different contestants, so when you add score of 4 contestants out of 5, what effectively you are doing is you are leaving out one contestant, right? 5 में से 4 का ऐड कर रहे हो मतलब एक का नहीं ऐड कर रहे हो. So let's say A might have left out another contestant, one different contestants, let's say S1. B would have left out S2, let's say. C would have left out S3. D would have left out S4. E would have left out S5. Something like this. Not necessarily in the same order, but I'm giving you an example कि कुछ ऐसा हुआ होगा. किसने किसको लीव आउट किया है वो अपन बाद में फिगर आउट करेंगे. So I hope couple of things are clear here, that each of them added 4 different contestants. Fine. And which is same as saying that each of them left out one of the contestants. Fine. Now let's start looking for whose score or whose sum of the score is incorrect या फिर wrong. Now let's suppose that A left out S1. So A would have added scores of S2 plus S3 plus S4 plus S5. So he left out S1 here. Similarly, if B left out S2, C left out S3, D left out S4 and E left out S5, assuming F का score is wrong. So each of them left out S1, S2, S3, S4, S5 respectively. तो अगर अपन इन चारों का स्कोर ऐड करेंगे, ये जो सम है ये सम ऐड करेंगे 660 plus 780 plus 690 plus 720 plus 630. If we add all this, what will happen is S2 will get added how many times? Let's check. S2 यहाँ पर ऐड होगा, यहाँ ऐड नहीं होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा. S2 will get added 4 times. Similarly S1 अगर बात करें तो S1 यहाँ नहीं होगा, S1 B में ऐड होगा, C में ऐड किया होगा, D ने ऐड किया होगा और E ने भी ऐड किया होगा. S1 भी 4 बार ऐड होगा. Similarly S3, S4 and S5 भी 4 बार ऐड हुए होंगे. So if we add scores of all these 5 people A to E, you will get 4 times S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5, which should be equal to 660 plus 780 plus 690 plus 720 plus 630. Fine. I'm again repeating.
if we add, assuming that F's score is wrong, F ने जो sum of the score calculate किया है वो गलत है, तो that will basically tell us that A to E का sum same A to E का sum correct है. So अगर हम A to E का sum सबका add करें तो ये जो sum मिलेगा हमें 660, 780, 690, 720 and 630 का sum will be equal to 4 times of S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5. Okay, so now this is what we'll be using to figure out कि किसने गलत सम कैलकुलेट किया है और किन पांच ने सही कैलकुलेट किया है. ठीक है, so now first let's calculate sum of all these 6 values. 660 से लेकर 750 का सम कितना आ जाएगा? 4230. This sum will come out to be 4230. Now assuming that the wrong sum is calculated by A. रॉन्ग सम ए ने कैलकुलेट किया है तो मतलब बाकी चार का सम करेक्ट होना चाहिए, यानी सॉरी बाकी पांच का सम बी सी डी ई एफ का सम करेक्ट होना चाहिए. सो व्हाट वी विल डू इज 4230 में से 660 सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा 4230 माइनस 660. So 4230 minus 660 will give us 3570. So 3570 is the sum of these 5 sums which we know should be equal to 4 times of S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5. Correct? So from here you'll have 3570 divided by 4 is S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5. Now 3570 divided by 4 is not an integer. This is not an integer. ये integer नहीं आएगा. But see, if you look at the question, last line में क्या दिया है? Score of each contestant is an integral value. अगर हर contestant का score integral value है, तो उनका sum भी एक integral value होना चाहिए. But 3570 is not an integral value. That means our assumption that A's sum was wrong is incorrect. हमारा assumption जो है ना कि A का sum गलत था, वो assumption हमारा गलत है. Hence A's sum was actually correct. ये तो certainty है कि A का sum तो correct था ही. Okay? Now let's move on to assuming that B's sum calculated, B ने जो calculate किया है sum 780 वो गलत है. Now assuming that the sum calculated by B is wrong, then that means the sum of the other 5 A, C, D, E, F का ये जो sum है वो कितना आएगा? 4230 minus 780. So 4230 minus 780 is 3450. 3450. And this we already saw that 3450 should be equal to, अगर हम A, C, D, E, F का sum करेंगे so that will come out to be 4 times of S1, S2, S3, S4, S5 का sum. So S1, S2, S3, S4, S5 का sum will be 3450 divided by 4. 3450 divided by 4 is again not an integer. Since this does not come out to be an integer, that means our assumption that B's sum was wrong is incorrect. हमारा assumption कि B का sum गलत था will be incorrect. So that means B का sum तो definitely correct है ही. Okay? Now let's look at whether C's the sum calculated by C, whether it was correct or not. So if you look at C, C sum is 690. So अगर हम C को consider नहीं करेंगे, so 4230 minus 690 हो जाएगा ये. So 4230 minus 690 will be 3540. So 3540 will be equal to 4 times of S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5. Hence this expression will come out to be 3540 divided by 4. This will be 832, 34 बचेगा 885. Okay, so you'll have S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5 का sum कितना हो जाएगा? 885. Okay, now since 885 is an integer, that means the assumption that C's sum was wrong can be true. So one possibility is
we'll look at the other possibilities also later on, but abhi tak the possibility that C's sum is wrong can be correct. So if C's sum is wrong, some of all the five contestants will come out to be 885. So if C is wrong, the sum of all five will come out to be 885. So in that case, let's look at which contestant did each of these six people or five people left out. यहाँ पर will not consider C because C का तो sum गलत था ही. Okay. So now if this sum is 885 for all the five people, so and A's sum calculated was 660. So that means the person A left out of these five contestants, A left out one of the contestants. So whoever the contestant A left out doesn't matter. उसका स्कोर जिसको लीव किया है उसका स्कोर क्या होगा 885 माइनस 660. ये सिर्फ चार का स्कोर है राइट एंड ये पांचों का स्कोर है. So the person whom A left out would be the score of the person whom A left out will be 885 minus 660. So that will come out to be 225. Similarly, the person B left out would be 885 minus 780, which is 105. And the same score for D will be 165, E will be 255, and F will be 135. Okay, so this is when we assume that the wrong sum was calculated by C. Okay, now assuming that the wrong sum was calculated by D, then जो sum है वो हो जाएगा 4230 minus 720. Sum of the other five people apart from D. So 4230 minus 720 will give you 3510. Okay. So 3510 is equal to 4 times of S1 plus S2 till S5. So ये हो जाएगा 3510 divided by 4, which is not an integer. Since this is not an integer, that means जो हमारा assumption था that D का sum wrong है वो गलत है. That means D का sum तो definitely correct होना ही होना पड़ेगा. D cannot be the wrong sum. D का sum तो correct होना ही पड़ेगा. Now let's calculate for E. तो E के लिए अगर आप कैलकुलेट करते हैं assuming that E's sum is wrong, so बाकी पांच का sum हो जाएगा 4230 minus 630, so this will be 3600. So this will come out to be 3600 by 4, 3600 by 4, so this will be 900. Okay, so now the assumption was that E calculated the wrong sum. So the correct sum of the five contestants should be 900 if we assume that E's sum is wrong. So sum of the five contestants is 900 and A calculated sum of four contestants as 660. So the score of the contestant whom A left out will be 900 minus 660. Okay, so that will be 240. So let's write down that here. A ने sum calculate किया this is when assuming E का sum is wrong. तो बाकी पांच का करेक्ट सम आएगा 900. सो ए का जो कैलकुलेटेड ए ने जिसको मिस किया है उसका सम होगा 240. सिमिलरली बी ने जिसको मिस किया उसका सम होगा 900 माइनस 780 विच इज 120. ओके, वहीं पर सी ने भी किसी को मिस किया होगा. तो अब यहाँ तो सी ने किसी को मिस किया नहीं जब सी रॉन्ग था, बट यहाँ पर सी ने किसी को मिस किया होगा. उसका स्कोर होगा 900 माइनस 690 विच इज 210. डी ने जिसको मिस किया होगा उसका स्कोर होगा 180. ई मिस करेगा नहीं, ई का तो सम ही गलत था तो वो कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है. एंड फाइनली एफ का हो जाएगा 900 माइनस 750 विच इज 150 हियर. ओके, सो दिस इज व्हेन अज्यूमिंग दैट द sum calculated by E was wrong. Now if we calculate assuming that the sum calculated by F was wrong, so ये हो जाएगा 4230 minus 750. So 4230 minus 750 will give you 3480. So 3480 will be equal to 4 times of S1 plus S2 plus S3 till S5. So this will become 3480 divided by 4, which is
8 बचा 28, 870. Okay, so now again assuming that F score was wrong, तो बाकी पांच का जो पांच कंटेस्टेंट्स का जो करेक्ट स्कोर है वो 870 होगा. So the person whom A left out, उसका स्कोर क्या हो जाएगा? 870 minus 660, which is 210. So again writing this down, when F score is wrong, तो बाकी पांचों का सम होगा 870. सो ए ने जिसको मिस किया होगा उसका स्कोर होगा 870 minus 660, which is 210. बी ने जिसको मिस किया होगा उसका स्कोर होगा 870 minus 780, which is 90. सी ने जिसको मिस किया होगा 870 minus 690, which is 180. डी ने जिसको मिस किया होगा उसका स्कोर होगा 870 minus 720, which is 150. एंड ई ने जिसे मिस किया होगा उसका स्कोर होगा 870 minus 630, which is 240. और एफ का तो सम ही गलत था, तो इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है. सो ये आ गई अपने पास तीन पॉसिबिलिटीज. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर whom the sum calculated can be wrong. Either the sum calculated by C can be wrong, or sum calculated by E can be wrong, or sum calculated by F can be wrong. Okay, in each of these three cases we have also calculated what would be the sum, what would be the score of each of the five contestants. Okay, now one final thing that is stated in the question or given in the question is that the organizers of the contest decided to award an amount of 10,000 for each point that a contestant scored. So each of the contestants, यहाँ पर अभी पता नहीं है कि 225 किसका स्कोर था, S1 का, S2 का, S3 का, या किसका था पता नहीं, but that does not matter actually. These are the 5 scores in whatever order they are. We're not bothered about the order. One of the contestants, if C का सम गलत था, then one of the contestants score will be 225, hence the sum awarded will be 225 into 10,000. This will be 2250,000. So this will effectively be 22.5 lakhs. 22.5 lakhs हो जाएगा ये. So अगर ये 22.5 lakhs है तो ये हो जाएगा 10.5 lakhs. डी का सम होगा 16.5, ई का होगा 25.5 और एफ का होगा 13.5. ये हो जाएगा 24, 12 lakhs, 21 lakhs, 180 lakhs, 150 lakhs, 21 lakhs, 9 lakhs, 180 lakhs, 15 lakhs and 24 lakhs. In each of these three possible cases, we have also calculated the amount that the 5 contestants will receive. Now let's come back to questions. What is the highest possible amount that any of the 5 contestants can be eligible for? तो highest amount तब होगा जब highest points होंगे. If you look at all these three cases, highest point कहाँ पर आ रहा है? Highest point आ रहा है ये E का the point scored by a contestant whom E left in the case when C का sum गलत है. So ये आ जाएगा 255. Points is 255, so amount will become 25.5 lakhs. Hence the correct option is B. Second question. If one of the contestants is eligible for 15 lakhs. Okay, देखो यहाँ पर 15 lakhs के लिए कहाँ कहाँ eligible है contestants. एक तो ये केस है और एक दूसरा ये केस है. So इन दो केस में one of the contestants is eligible for 15 lakhs. यहाँ पर 15 lakhs किसी को नहीं मिल रहे हैं. So the question is specifically talking about these two cases. Then what is the total amount that the organizers have to give away to all the 5 contestants? तो सबको मिलाकर कितना अमाउंट देना पड़ेगा? इस केस में 90 lakhs और इस केस में 87 lakhs. करेक्ट, क्योंकि sum of all the 5 is 900 and 870. तो यहाँ पर अब एक कोई सिंगल आंसर तो आ नहीं रहा. 90 lakhs भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, let's move on to the third question. If two of the contestants put together are eligible to receive exactly rupees 45 lakhs, then who among the following could have made the mistake while adding the scores? So if you look at all these three possibilities,
दो लोगों का सम एग्जैक्टली 45 lakhs आना चाहिए। तो अगर ये वाला केस देखो यहाँ से 24 lakhs plus 21 lakhs, दिस गिव्स यू 45 lakhs। सिमिलरली यहाँ पर 21 lakhs plus 24 lakhs गिव्स यू 45 lakhs। यहाँ पे सम 45 नहीं बन पाएगा। ओके, सो बेसिकली अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो या तो एहसान हो सकता है या फरहान हो सकता है, बट फरहान ऑप्शंस में है नहीं, सिर्फ एहसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एहसान। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, if the amount awarded to S1 was half of that awarded to S3, which in turn was less than the amount awarded to S5. Okay, amount awarded to S1 was equal to half of the amount awarded to S3, and the amount awarded to S3 was less than the amount awarded to S5. Who made the mistake while adding the scores? Okay, let's see. Let's start with this first possibility. अगर C ने गलत सम कैलकुलेट किया था, तो सबका स्कोर क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है। सबका स्कोर ऑड और ऑड आ रहा है, तो हाफ करने का तो कोई मतलब है ही नहीं, वो इंटीजर नहीं बनेगा, तो ये C की इस केस की तो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस केस, सेकंड केस, S1 स्कोर इज हाफ ऑफ S3, तो ये हो जाएगा 240 का हाफ 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा S1 का स्कोर और ये हो जाएगा S3 का स्कोर। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ हाफ इन दिस केस। ठीक है, बट अगेन ये बोला S3 स्कोर इज लेस देन S5, बट इस केस में तो S3 का स्कोर हाईएस्ट हो गया 240, S5 का स्कोर तो पॉसिबल है ही नहीं, तो वो इस केस की भी बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है इस केस की, दैट S1 हो जाएगा 90, S2 हो जाएगा, सॉरी S3 हो जाएगा 180। So S1 score is half of S3 score, whose score is less than S5 scores, S5's score. So S5 या तो 210 हो जाएगा या फिर S5 240 हो जाएगा, but जो भी होगा, in any case we are talking about when F calculated the wrong sum. So who made the mistake while adding the scores? Farhan made the mistake while adding the scores. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C. Okay, so that's it for this set. मेन चीज क्या थी यहाँ पर? अंडरस्टैंडिंग दैट दी 6 में से एक जो जिसने गलत सम कैलकुलेट किया उसको हटा दो, तो बाकी 5 का जो सम है वो आएगा, सम का भी सम करने पे आएगा 4 टाइम्स ऑफ S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5, and that should come out to be an integer basically. Okay, so that's it for this set. Thank you.